to arrange the webinars of diverse experts on our platform and expect the same support throughout. For any major task, bonding among the group, and I'm feeling proud that we have the bonding of 4 HOIs of 4 constituent colleges of Parul University who are working together and ensure this great success. At this point, let me mention that today is the special day. It is a birthday of our leading team member, Dr. Hina Rawal Madam. So on behalf of Faculty of Homeopathy, I am conveying the birthday wishes. Madam, wish you all a many happy returns of the day and have a wonderful life ahead. Without wasting time, let me introduce the second team member of our team, Dr. Hitat Mehta sir. He is a principal of Rajkot Homeopathic Medical College and professor in Department of Practice of Medicine. He is a member of Board of Studies, Parul University, and ex-members of Board of Studies, Saurashtra University, Rajkot. Over to Dr. Hitat sir to introduce the today's speaker, Dr. B.T. Rudresh. Please, sir. Good afternoon to one and all present in this webinar. I have been given this opportunity to introduce highly eminent speaker of today's webinar, respected Dr. B.T. Rudresh sir. Dr. B.T. Rudresh sir is practicing as a homeopathy physician at Aswini Homeopathic Clinic at Bangalore, Karnataka. Sir is MD and PhD in homeopathy. Dr. Rudresh sir is recipient of prestigious Hahnemann Gold Medal and Kempego Awards. At present, sir is president of Karnataka Board of Homeopathic System of Medicine, serving as the executive member of Board of Governance of CCL New Delhi, member of faculty at Rajiv Gandhi University of Health Science at Karnataka, chairman of the Homeopathic Foundation. Sir is academic in the field of homeopathic education, and we are fortunate enough for getting an opportunity to learn from him. So I request sir to begin the session on infertility and its homeopathic perception. Over to respected Dr. Rudresh sir. नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. I am thankful to Parul University. Parul जी मेरे साथ एक 6 महीने थी as executive member. I know her personally well. She is a very good. I was also knowing her father in Delhi. So we have heard a lot about your university, and I am happy to be with you today. I'm thankful to Parul University homeopathic staff who made me to share my clinical experiences. I am basically a homeopathic doctor. If I am the Board of Governor, Executive Committee, CCH, President of Homeopathic Board, syndicate member, Rajiv Gandhi Health University, Senate member, ये सभी blah 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 blah, ये सभी का जरूरत नहीं है. जरूरत सिर्फ ये है कि आई एम ए भोला बाला रामपुर का लक्ष्मण, होम्योपैथी प्रैक्टिस पिछली 40 साल से यही जगह में जब मैं बैठ वेयर आई एम सिटिंग उधर मैं 40 साल से कर रहा हूं. दिन में 100 to 150 patients who come to me who have taken appointment 2 months earlier. तो अगर मेरे बारे में कुछ अपवाद है, उनके पास वो वीआईपी लोग का कुछ अपवाद है, नहीं वो किसी को परवाह नहीं करता है, 2-2 महीना वेट करना पड़ता है. तो एक टाइम में इतना हो रहा था, मेरे क्लिनिक के बाहर लाठीचार्ज भी हुए. वो इतनी बड़ी भीड़ थी. मेरे को ये मेरा बड़ापन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं एक भोला बाला आदमी बेंगलुरु आया 45 years बैक. होम्योपैथी बोला तो सब हमारा नाक पकड़ते थे, अरे साले वो देख पुड़िया आया है. जब एलोपैथी डॉक्टर्स के बीच में जाते थे कोई पार्टी में, वो पीछे खड़ा के मेरे ऊपर ऐसा दिखा के बोलते थे, ए देख पुड़िया भी आ गया 5 स्टार होटल में. तो पुड़िया नहीं आ सकता था तब. मैं आड़ी कार में घूमता हूं. 20% of Bangalore's allopathic doctors and their families are my patients. मेरा टाइम भी, वक्त मेरा भी आ गया. मैं अभी गर्व से बोल सकता हूं आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर. ये क्यों बता रहा हूं आपको? इट मे बी द सेम थिंग विथ ऑल ऑफ यू.
It is not just Rudresh. Anybody who has stuck to their principles, the boy who stood on the burning deck, he is bound to do a lot of things. But if I can do it, you can do it better. Today, I see literally all over the globe, starting from Ghana, South Africa, US, Australia, New Zealand, अब बोलो किधर से, वेस्ट इंडीज, सब जगह से लोग इधर आते हैं. 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेके बैठ जाता है. मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको? इफ यू आर ए सिंसियर conscientious homeopathic doctor, a fellow who did not know English 40 years back, अगर कोई what बोलता तो मेरा इंग्लिश what नो था, अगर एक आदमी ऐसा कर सके भी, I wrote a column for English Premier Daily of Karnataka for 3 years, Hearing Touch. वो बहुत पॉपुलर हो गया. वैसे तो now I have been invited for Greece to present my 3000 solved infertility cases to 32 countries specialists. वो क्लासिकल होम्योपैथी जो अलोनिसिस में थे, he was जॉर्ज वितलकास was kind enough. उनके साथ मैं आधा दिन गुजारा, 7 बजे से रात 12 बजे तक एक पार्टी में. पार्टी का मतलब वेजिटेरियन और कुछ नहीं है, पानक था, तीर्थ रूप का. तो he was so happy, I was so happy to share my clinical experience. वो प्यार से मेरे ऊपर हाथ डाल के बोला, तू एक दिन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा. मैं से नहीं सर, मेरे को छोड़ दीजिए, छोटा आदमी हूं, कैसे भी खाना पीना कर रहा हूं, मेरा जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो, मेरे को वो इच्छा नहीं है. इफ आई वर टू बी इनटू द पॉलिटिक्स लॉन्ग बैक कर सकता था, क्योंकि कर्नाटक में अभी ऐसा है. तो कर्नाटका हैज गिवन मी अ टाइटल known as Nadoja, where if you have Padma Shri you cannot affix, but I can affix Nadoja. Nadoja का मतलब लोकमान्य, guru of the land. This is for purely for your information. Only 2 doctors in Karnataka has this गर्व, बोल सकते हैं कि yes I am Nadoja, and one is this बोला वाला होम्योपैथी डॉक्टर. ओ मैं क्यों आपको बता रहा हूं? इफ यू डू योर जॉब सिंसियरली, सोसाइटी विल पे बैक. Go back to Herbert Roberts' first chapter. Young man, what do you want? You want from homeopathy? नहीं, तुम homeopathy को क्या देता है वो बोलो. If you are not a mercurial temperament, if you are a good homeopathic conscientious doctor, society will pay back everything whatever you give. I can vouch for that too with all my professional brothers. And if there are more number of students, वो लोग को जाना चाहिए. ये स्टूडेंट्स लोग को थियरी क्लास पढ़ाता है क्लास में, लेकिन वो स्विमिंग पूल में जब चला जाता है, सांस पहला लेने का, हाथ पहला मारने का, डूब जाते हैं और मर भी जाते हैं. We cannot teach students in the classrooms. और if they are students, तुम्हारा सीनियर्स कोई अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पकड़ो, एटलीस्ट 6 महीने से 1 बरस तक उनके बाजू बैठो. वॉचिंग ए जीनियस हु इज वर्किंग, वॉचिंग, वो तुमको आई कैनॉट टीच. अभी मेरे बाजू में 4-5 लड़की लोग अभी 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा है. आई हैव नॉट टॉट, इट्स नॉट अ टीचिंग हॉस्पिटल, टाइम नहीं है. लेकिन द वे आई बिहेव, दे लर्न सो वेल. ऑर्गनान, मेटीरियल मेडिका, रेपर्टरी, वो ट्रायंगल में ही जाने का. तुम्हारा कितना नॉलेज पैथोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, दे आर ऑल सप्लीमेंट्री, बट यू कैन नॉट लीव दी, यू कैन नॉट मिस द वुड फॉर ट्री. बहुत सारे चीज किया हूं. अभी परसों एक माता आई थी, लड़की, आजकल की वो लड़की लोग वो जो वो करता है ना, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स,
अभी बच्चे नहीं हो करके आता है, वो रात का ड्यूटी में पहाड़ी में जाती है काम के लिए, वो आते आते ही हस्बैंड सुबह निकलते हैं और इसको बच्चे होने का हम किधर से लेके आए हैं। और वो आके बोलती है डॉग आई हैव पीसीओएस डॉग। अच्छा ठीक है, वो क्या होती है माता जी, वो क्या होता है? तो वो बोलती है आपको मालूम नहीं है क्या? अरे मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम ये होना चाहिए, तुमको क्या मालूम है? तो वो बोलती है पीसीओएस डॉग। तो बाद में बोला क्यों ऐसा हुआ है? ओबेसिटी डॉग। ओके, ओबेसिटी क्यों हुआ है? नहीं है, ठीक है। ऐसे है 5 मिनट में वो बार गूगल देखा, गूगल देखा, गूगल टेल्स यू दिस। मैं बोला अरे साली, तू गूगल के साथ रहने वक्त तू हस्बैंड के साथ रहता था, अभी देखो तेरे को बच्चे हो जाता था। अरे गूगल के साथ क्या रहती है, हस्बैंड के साथ रहो। और देन आई स्ट्रेट अवे कम टू दी थिंग्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, एक एक केस लेके आपको दिन भर सुना सकता हूँ। वो प्रैक्टिशनर का वो इतना स्वर्ग जन्नत मिलता है, अरे पूछो मत, पूछो मत। सब लोग आता है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, वो इंटरनेशनल डान एक्ट्रेसेस। वो 8 दिन पहले एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मिली होटल में, हाय डॉग तुम्हारा नाम बहुत सुना हूं, तुम बहुत बच्चे बनाते हो। अरे मैं नहीं बनाता है, मैं दवाई देता हूँ। अच्छा, तो वो बोली मेरे को तुम्हारा क्लिनिक देखना है। अरे मेरी माँ, तू क्लिनिक मत आओ, क्लिनिक में देखती तो कुछ नहीं है, 3 बेंचेस है, मेरा एक टेबल है, अगर देखना है तो इधर देख, मेरा उधर रहता है क्लिनिक, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रहता है, वो सब नाटक है। अगर लोग चाहते हैं तो दे दो, मेरा क्या जाता है। if there are people to buy, there are people to sell, लेकिन आई डोंट सेल माई सेल्फ। मैं वो ठीक से बोल देता हूँ, आई एम ए कन्विक्शियस मैन। वो मेरे बारे में क्यों इतना बोल रहा हूँ, आपको शायद सीनियर लोगों को ऐसा होगा ही इज ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ ए फिजिशियन इज आल्सो मैटर्स इन होम्योपैथी। अगर तुम जल्दी से आ गया, जल्दी जल्दी फैक्ट्री में तैयार होके आ गया, वो हमारा 50 साल पहले वो गुड़ था, जागरी, वो गुड़ था स्वीट ऑफ पुर, वो नेचुरल में बनते थे। शुगर वॉज द स्वीट ऑफ एलिट क्लास, वो फैक्ट्री में बनता था। तो अगर मैं फैक्ट्री में बनने का स्वीट तुम है, मैं क्या करूं, मैं तो गुड़ तैयार कर रहा हूं। तो बात यह है, अनलेस द फिजिशियन इज एवॉल्व, तुम्हारे पास 1 मीटर का टेप है, तुम्हारे सामने एक पेशेंट आया वो 2 मीटर है, उसको कैसे तुम मेजर करेंगे? यू विल हैव टू हैव ए टेप फ्रॉम 0 to infinity। फिजिशियंस क्वालिटीज देखो, अगर इफ देयर इज अ फेल्यूर, इट इज द फेल्यूर ऑफ द डॉक्टर, नॉट ऑफ द सिस्टम। और दुनिया के जो जो अंडर है सबको क्लेम मत करो। बार्ड का डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी पढ़ो, साफ सीधा लिखा है क्या? irreversible things cannot be done। मतलब साफ सीधा है, you will have to go through repertory, organon, and I think straight away I'll go to my presentation। आगता of course, one thing I would like to inform my professional colleagues and students that I am not a infertility specialist। I am a pakka homeopathic doctor। Whatever the case comes to me, I will take। मैं अगर मेरा क्लिनिक मार्केट में खुला के बैठा हूं, मैं इसी केसेस को देखता हूं, इस केस को नहीं देखता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं, कोई केस आए मैं लूं। हाँ, मैं एक मेरा पहला केस था, मेरे को मालूम नहीं था, वन डे आई विल हैव दिस काइंड ऑफ 3000 सॉल्व्ड केसेस विच इज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही आदमी एक ही सेंटर से नॉन इन्वेजिव वे से इतनी कम खर्चा में 3000 केसेस सॉल्व करता है सकता क्या, मेरे को जरूर मालूम नहीं था।
I was certainly not aware of. 20 साल पहले मेरा पहला केस था, एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम ए बिग हॉस्पिटल ऑफ बैंगलोर. उनका पहला प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी थी. शी हैड एन एनेनकेफेली, हेड नहीं था, अबॉर्ट करा दिया, प्रीमेच्योर डिलीवरी करा के निकाल दिया. कोई बोला होम्योपैथी में जाओ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देंगे, 6 महीने के बाद कंसीव हो जाओ, ठीक होता है. वो आई मेरे पास, मैंने सब केस लिया, हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट, किधर किधर क्या है, फिजिकल जनरल्स क्या है, मेंटल जनरल, सब लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन पे आके बैठ गया. आफ्टर 1 year she did conceive, delivered a male child. That was my first case. मतलब ये था, मेरे को ऐसा लगा कि क्यों नहीं. And after she went back to her hospital, she started sending cases similar to her cases. So I started getting lot of references from her. From then on, it spread like a wildfire. वो पहला 200 केस मैंने जब किया था 2007 में, there was a big press conference in Karnataka. फ्रंट पेज में छपा हुआ था, इतनी कम खर्च में. कम का मतलब 100 rupees was the lowest charge. The maximum charge which was charged was 2000 in 1 year. I have all the documents. I have all the documents of these 3000 cases documented: name, age, sex, diagnosis. अगर मैंने होम्योपैथिक दवाई दिया था, क्या दिया था, कितना दिन का ट्रीटमेंट था, and when was the confinement, when is the delivery, what medicines finally, and how much charge I have done. This tabulation is available with me for all the 3000 cases. मतलब साफ सीधा, इतनी कम खर्च में अगर कोई करे, अरे सुनो मत. हमको और एक चीज मालूम होना चाहिए. वी आर इन ए इंडियन कॉन्टिनेंट. इंडिया में क्या है, विदाउट मदरहुड देयर इज नो वुमनहुड. आप कितना भी बड़े हो, कितना पुरोगामी हो, कितना अग्रेसिव हो, या तुम्हारा इंटेलिजेंट हो, आधुनिक हो, कैसे भी हो, विदाउट मदरहुड देयर इज नो वुमनहुड. वी हैव सीन दैट. एंड वन मोर थिंग, वो हमारी भारत में ये क्या बहुत बड़ी चीज है क्या, 130 करोड़ है, हमको चिल्ड्रन का मतलब है क्या, होने का क्या. चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ऐसा एक कहावत है. चाइल्ड हमको क्यों इतना प्यारा होता है, दूसरों का चाइल्ड हमको क्यों प्यारा नहीं होता है. हाँ, मोदी जी को प्यारा होता है दूसरों का बच्चा, गांधी को मालूम होता है, सब दोनों गुजरात से है. विवेकानंद को भी दूसरों का बच्चा भी वो उनको मानते हैं, लेकिन हमको किधर मानते हैं. आजकल का जमाना ये आ गया कि हमारा बच्चा ही हमको मानना बहुत मुसीबत हो गया. बट फिर भी हमारा हर लोगों का कामना यही होता है कि मेरे बच्चे हो. क्यों? चाइल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ, इमेज ऑफ सेल्फ. आपका ही आईना है वो, आपका ही एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ है वो, इसलिए हमको प्यारा लगता है. और ये बनने से क्या होता है, the physiological, the psychological imbalances of these forces, they get corrected. एक बॉन्डेज आता है, फैमिली चला ना सकता है, इसको भी एक स्फूर्ति मिलता है कि मेरा बुढ़ापन में मेरा बच्चा देख लेता है. हाँ, कई बुढ़िया मेरे पास आके बोलता है, मेरे को मालूम होता था मेरा बच्चा ऐसा है, मैं जब पैदा होता था तब भी कर्म करता था, खत्म कर देता था. वो अलग बात है, सामाजिक स्थिति बदल गया, बट फिर भी कामनाएं टू हैव ए चाइल्ड इज समथिंग इनकम्पेरेबल इन अवर सोसाइटी. एंड एज आई टोल्ड यू, शेक्सपियर और 130 करोड़ है इंडिया में, हमको अभी भी जरूरत क्या. हाँ, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक. अगर तुमको पीने का पानी नहीं है तो तुम्हारा समुद्र के किनारे बैठ के क्या करेगा. 130 करोड़ है, लेकिन तुम किसी का नहीं है और तुम्हारा कोई नहीं है. हम किसी का ना रहे, कोई मेरा ना रहे, ऐसा हो गया ना काम. तो इसीलिए टू हैव ए चाइल्ड वो आजन्म सिद्ध हक बनता है सबका, इसलिए वो होता है. और शेक्सपियर आगे बढ़ के यही बोलता है,
Man lives through his poetry and progeny. सबको काव्य रचना कर नहीं सकते ऑर्डिनरी मैन, बच्चा तो पैदा कर सकता है, दैट्स हाउ ही लिव्स एंड दैट्स हाउ सो मच ऑफ पैराफर्नेलिया गोस अराउंड. और as I told you, child is father of man. We all our love children, but you should evolve yourself to love other children as your children. That is a very enlightened souls can do that, not all of them. Now, straight away come to the point. Whoever has come to me, these 3,000 cases, most of them have come as a last resort, not as a first resort. IVF हो गया, IUI हो गया, 6 महीना हार्मोन पिल्स, हार्मोन इंजेक्शंस हो गया, ट्रांसफर्स भी कर दिया, आर्टिफिशियल डोनर से भी करा दिया, पैसा तन मन धन सब खो गया, उसके बदले क्या आ गया? बहुत बड़े बड़े मूछ, बहुत बड़ी बड़ी ब्रेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी वजन, क्या नहीं, और जेब खाली, बंदे सीधा खाली वापस गई घर में. कोई बोला होम्योपैथी ट्राई करो तो आ गई. हमारा प्रॉब्लम यही होता है. मैंने एक डॉक्टर लोगों का घर में एक लड़की क्या बोलने का, लेडी को देखा था. शी वॉज 37 ईयर ओल्ड. उसका अब्डोमेन के ऊपर 17 मार्क्स था. कोई कारण से उसको 17 टाइम्स ऑपरेशन करा गया था. कई बार पीआईडी, कई बार सिस्ट, कई बार पेरिटोनाइटिस, क्लियरेंस, अपेंडिक्स, क्या क्या नहीं, अब्डोमेन में जो जो चीजें तुम बताओ, बेरी एंड लव में सबको निकाल दिया था. और ये माता मेरे पास आ गई, 37 इयर्स, घर में 8 डॉक्टर्स है, इसको अभी बच्चे होने का. मैं बोला अरे माँ, तुमको और कोई नहीं मिला क्या, मेरा क्यों टेस्ट करते हैं? फिर भी शी इंसिस्टेड. आई वेंट ऑन टू ट्रीट दैट केस, treated for 1.5 years to started with pyrogenum, thiocyanamine, calcarea floor, tuberculinum, and her constitutional medicine Netromure. Believe me, after 1.5 years she conceived. After 9 months, the 18th cut was given on the abdomen as a LSCS. ये सबका एक एक कथा है, सबका एक एक स्टोरी है. वो कोई घर बेच के आया है, ब्याज में 5% पैसा लेके आया है. कोई येजुस परमिया का केस, यू मस्ट बिलीव, फर्स्ट 1000 केस का टैबलेशन में बाद में दिखाता हूँ, टाइम है तो. 14 येजुस परमिया केसेस. 20 साल पहले अगर कोई मेरे पास आके बोलता था ऐसा केस मैं देखूं, आई विल कम टू द एंड. व्हाट इज होम्योपैथी आपको मालूम है, आई डोंट गो इनटू द डिटेल्स. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? दोनों शादी करके, हमारा समाज का बात कर रहा हूं, यूरोप का, लंदन का या और किसी देश का नहीं है, मेरा देश में शादी करके दोनों साथ में रह के, दोनों का सेक्सुअल एप्टीट्यूड ठीक रह के, ओवुलेशन टाइम में इंटरकोर्स करके, मेंटेनिंग ऑल द नॉर्मल थिंग्स, 2 साल हो गए फिर भी बच्चे नहीं है, तब वी कॉल दैट एज केस एज इनफर्टिलिटी. और ये लोग भी थक चुके हैं. दे स्टॉप्ड गोइंग टू फैमिली बिजनेस, दे स्टॉप्ड गोइंग टू फैमिली फंक्शंस, क्योंकि सब जगह पूछा जाता है कि तुमको बच्चा नहीं है. हस्बैंड को पूछा जाता है, उनका फ्रेंड्स क्या रहे, कुछ नहीं क्या, अरे साले, इतना इतना इज्जत चला जाता है सबके सामने, वो चारा जाना बंद कर देता है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे विल बी कैस्टिगेटेड बाय द सोसाइटी. तो कारण यह है. दूसरा कारण फैक्टर्स इटियोलॉजी में हम देख सकते हैं. पहला 3 कारण दोनों में हम याद रखने का. पहला कारण ओबेसिटी, दूसरा टीबी, तीसरा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस बिटवीन द स्पाउसेस. ये तीनों चीज में ये होता है. मेल में क्या, डायबिटीज, ओबेसिटी काजिंग इम्पोर्टेंसी. आजकल तो इम्पोर्टेंसी इतना कॉमन हो गए, जो हमारा वो नाइट ड्यूटी करने वाले,
बहुत आधुनिक बोलने वाले, प्रोग्रेसिव बोलने वाले, दिन भर 20 घंटा काम करने वाले। अभी तो ये लॉकडाउन में सब घर में बैठ के कर रहे हैं, देखेंगे अगर बच्चे ज्यादा होता है क्या ना, वो सब दिसंबर में मालूम होगा। फिर भी दे हैव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और प्रियोरिटी उन लोगों को बहुत बहुत पसंद है। फैमिली उतना इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग दे आर कमिंग विथ erectional डिफिशियंसी एंड प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस एंड स्पर्म भी कम हो रहा है। सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, इसके पीछे पड़ के वो लोगों का ताकत भी कम हो रहा है। एंडोक्राइन फैक्टर से डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे लोग जो डर गया समझो मर गया। मेनी पीपल डाई बिफोर द वॉर, बिफोर द एक्ट लॉट ऑफ पीपल डाई। नहीं कर सकता है वो जो करना, वो मोस्ट ऑफ द थिंग साइकोलॉजिकल बनता है। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन दूसरा काज है। फीमेल में सप्रेसेस ओवुलेशन, सर्टनली ओवुलेशन है। थायराइड और पीसीओडी भी दूसरा कारण है। एंड गर्ल्स नेट्रोम्यूर जैसे हो, स्टेफिसाग्रिका जैसे हो, हर चिड़चिड़ होता है हो जाती है, हर आधा घंटे में चिड़ापन, angry, whenever she gets into angry, 10 ml of adrenaline has been pumped into the stream of blood. वो क्या करता है, वो एफएसएच को बंद करता है। वो क्या करता है, वो पेरिफेरी में ओवरी में जाके सिस्ट बनता है और बच्चे नहीं। तो आपको यही बोलना पड़ता है। होम्योपैथी में हम यही बोले हैं, these are all the causes which are seen. unseen क्या है, होम्योपैथी डॉक्टर is not the doctor naming one disease, fixing on medicine for that disease. He will be called as peddler of medicine. तो हमको क्या करना है, तुमको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनने का, पेशेंट का भी और सोसाइटी का भी और रीति रिवाजों को भी। तो इधर एनाटॉमिकल में जो फाइब्राइड, सर्विक्स, एंडोमेट्राइटिस, ट्यूबल ब्लॉक, ओव्यूलेशंस, ये सभी होता है। तो वो ये मेरा पहला केस है। I think how much time I have left? Okay. पूर्व जी हमारे पास कितना टाइम है? पूर्व जी, Sir, you continue. We are having time with us. Sir, half an hour is there. half an hour. Should I exactly cut it at half an hour? Can I take another 10 or 15 minutes more? Sir, half an hour is already 5-10 minutes extended time, sir. Actually, because there is another webinar on the same platform from other faculty. That is why. ठीक है, मैं 30 मिनट में कंटिन्यू करो। 30 मिनट में कंप्लीट कीजिए सर। यस सर। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। यस सर, प्लीज सर। इसलिए देखो, दिस इज माय फर्स्ट केस। This is my first case of 37-year-old man, married since 10 years. वाइफ को 30 साल हो गया। वाइफ अगर आया तो 30 साल के ऊपर मना करता हूँ। मैन को 40 years हुआ तो मना करता हूँ, क्योंकि there are every chances of ADHD, autism, developmental delay, global developmental delay, तो इसके मना करता हूँ। फोर्स किया तो करता हूँ। अगर कोई ये देखो, complaints of primary infertility suggestive of azoospermia, ये पैथोलॉजी देखो। अगर यही आदमी मेरे पास 20 साल पहले आता था और बोलता था मेरा एजोस्पर्मिया है, लेफ्ट टेस्टिकुलर डिस्टॉर्शन, राइट एपिडिडमल कैल्सिफिकेशन, बायलैटरल क्रॉनिक एपिडिडियो आर्कोमेटिस और बायलैटरल वेरिकोसिल है, एजोस्पर्मिया है, कोई कारण से एक केस मैं हाथ जोड़ के नहीं लेता था। मेरे को मालूम पड़ा व्हेन देयर इज हाईवे व्हाई गो इन बाईवे। मैंने सब पैथोलॉजिकल चैनल अभी बंद हो गया। मेरे को ऐसा लगा मैं इसका दूसरा चैनल निकालना पड़ता है। मैंने क्या कर दिया, ये सब छोड़ के सीधा मैं लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन में चला गया, क्योंकि पैथोलॉजी में चला जाता तो मेरा रास्ता सब बंद है। तो दूसरी रास्ता निकाला, उसका लाइफ स्पेस ऐसा था। ही वॉज ए टी स्टॉल ओनर, रोड के बाजू में टी बेचता था। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, दिन में बहुत अच्छा टी बनाता था तुमकुर के बाजू। और जब पानी वो जो सब पीते थे, सिगरेट मारते थे, इनको पूछते थे क्या भाई क्या नाम? हाँ राजू। अच्छा कितना साल हो, शादी हुआ? 10 साल। बच्चे हुए? नहीं। क्यों नहीं हुआ? तुम मर्द नहीं है क्या? ऐसा उसको इतना, he has come to level of stopping his business and unwanted questions
wounded honor, ये सभी काय को करके, लेकिन उसका पेट का पापी पेट का सवाल तो वो ही कंटिन्यूड, very sensitive child, financial stress. For him, respect and honor very important. Sensitive what others say about him. He had a massive suppression of his business, meeting so many types of people, brought up in a rigid, strict environment. As a poor man, he has to suppress his anger and sex, दोनों things. वो fear, hurt and shame, inability to express anger, ये सभी मैंने केस वर्कआउट करने के बाद किया है, लेकिन इसको करने में मेरे को 1 हफ्ता लगा, केस फुल बनाने में, रूब्रिक्स में लाने में, और ये सभी करने के बाद आई एम श्योर यू नो द रेमेडी. It was Staphysagria 1M. Ailments from suppressed anger, ailments from mortification, embarrassment, wounded honor, offended easily, sensitive to reprimand, trembling when anger. This is the plant. You have to, whenever you study a medicine, कोई मेडिसिन सोरा, कोई मेडिसिन साइकोसिस, कोई मेडिसिन साइकोसिफिलिटिक ऐसा नहीं है. अकोनाइट इमरजेंसी के लिए, बेलाडोना फीवर के लिए, जैल्सियम आतंक के लिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंटीसिपेटरी. No, we cannot strictly depend upon that. Each medicine is understood in its whole length of total miasmatic characters, modalities, total personality. ये देखो, plant stands along the fence, stems are sturdy but hollow. Understanding of action of, वो देखो CNS आप थोड़ा देख लीजिए. I don't go to explain since I have very less time. Seed produces vomiting. Now when he has come to me, at what juncture he has come to me is more important. He has come to me, he has traveled from Sora. Sora उधर ही रहता था ना, माइंड में रहता था, लेकिन continued over long time of suppressed vexation, suppressed sex, suppressed anger, suppressed wounded honor, ये सभी ज्यादा दिन मन में रख लिया तो वो साइकोसिस में परिवर्तन हो गया. When he has come to me, he was in a psychotic state. Hypersensitive external impressions, strict father, pride, inside and outside reality, unable to express himself. APD, progressing chronic states of deep-seated anxieties, eczema, psychosis, going to syphilis. इसको Staphysagria 1M दिया. That was my consultant date. Wife delivered. We have to go through organon. Without organon, if you are treating, sorry, you are a peddler of medicine. Without repertory you are treating, then I am sorry. If you are an intuitive prescriber, artistic के बाद, scientific के बाद, if you are an intuitive prescriber, you have spent whole of your life for 50 years, now you know what it is, then it is different. But you have to cross check, there is a possibility of failure. Hahnemann has made very clear that a patient, in addition to study of symptoms, he has required turn affected in other energy fields. ये मेरा दूसरा केस है. ये ऐसा ही एक सिमिलर केस था, लेकिन ये भी ऐसा ही आदमी था. मेरा पहला केस सक्सेस हो गया, स्टैफिसाग्रिया. इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको भी स्टैफिसाग्रिया दे दिया. सेवन एनालिसिस, नील काउंट देखो, सेम सेल्फ ब्लेम, इंडिग्नेशन, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस. पिछले केस में हो गया था ना, प्रैक्टिस ज्यादा रहता है, 150 लोग खड़े रहता है, 3 घंटा 4 घंटा वेट करता है, तुम्हारे सामने आ गया, तुम कंफर्मेटरी टेस्ट 2 मिनट में करना पड़ता है, केमिस्ट्री में करता है ना ऐसा. वॉट एवर इज अवेलेबल, क्राउनिंग सिम्टम्स उसको ले लो, उस दिन के लिए भेजो, देखेंगे. ऐसे ही किया, लेकिन नहीं हुआ. स्टैफिसाग्रिया दिया. हमको क्या करना पड़ता है, एक एक बार ऑनियन का जैसे फील करना पड़ता है. वॉट एवर द इंडिकेटेड रेमेडी व्हेन ही कम्स, दे दो. नया सिम्टम आता है, उसको ट्रीट करो. मैंने इस केस में क्या कर दिया, इसको छोड़ के दूसरे में चला गया, बोजर में चला गया, प्यूरली ऑन फिजिकल थिंग्स. 2 थिंग्स, रिटार्डेड एंड स्लो. मोटिलिटी, लेजी बम, आगे नहीं जाता है साला, रिटार्डेड है, तो बैराटा कार्ब चूज कर लिया.
बेरेटा कार 1M डिड द ट्रिक। देखो काउंट उनका कितना आ गया, 81 मिलियन। एक बार मिलियन काउंट आ जाता है, बच्चे नहीं होता है। और एक बार ऐसा ही हुआ, एक एजुस्पर्मिया केस में, आने लाइटर वेन आई एम टेलिंग यू, एक एजुस्पर्मिया केस में दवाई दिया, उसका चेकअप नहीं करवाया था, उसको बच्चे हो गए। तो मेरा असिस्टेंट, वो जो बहुत साइंटिफिक है, वो बोली सर इसका सेमेन एनालिसिस कंसीव होने के बाद क्यों नहीं करवाया। मैंने बोला अरे बच्चा हुई है और क्या चाहिए तुमको, बट सर रिकॉर्ड से लिए करना पड़ता है। तो रिकॉर्ड से लिए कर दिया, लेकिन उसका काउंट फिर भी एजुस्पर्म में ही आ गया। वाइफ को मालूम था ये रुद्रेश के पास जा रहा है, क्या हुआ क्या मालूम, मित्र से पुत्र संतान हुआ, इससे ही हुआ, मेरे को मालूम नहीं है। नाउ विच आई टोल्ड यू आई एम नॉट ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हर केस में आपको एंट्री पॉइंट लेना पड़ता है, वेदर इट इज अक्यूट केस, क्रॉनिक केस, प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन करने का, की नोट्स लिया, स्पेसिफिक्स दे रहा है लाइक पैरोटिडिनम इन ए मम्स केस, और नोसोर्स देना पड़ता है मेडोरिनम। What is the totality? How to erect a totality? Who decides? Not the doctor. It is the patient who decides. आपके सामने वो बैठे हैं, उनको हमारा भाषा परिभाषा सब मालूम नहीं है, उसको सब आजकल तो गूगल सब मालूम है, एलोपर्स जो बोलते हैं वही मालूम है, लेकिन हमको we have to stick to our guns. Obviously, aphorism the tree is certainly operational. Disease, medicine, potency, limitation, miasm. वो मेरा पहला 1000 केसेस का मैंने टैबुलेशन कर दिया, उसमें 800 फीमेल इनफर्टिलिटी, 200 मेल इनफर्टिलिटी आ गई, उसमें ऑलिगोस्पर्मिया 110, ऑलिगोअस्थेनोस्पर्मिया 50, एजुस्पर्मिया 50, अनडिसेंडेड टेस्टिस 5, वीडियल रिएक्टिव 2, एपिडिडिमिस 2, वेरिकोसिल 6. I have usually commonly used remedies in male infertility whenever there is an indicated remedy like sulfur, calcarea, lycopodium, नहीं तो बेरेटा कार्ब, ट्यूबरकुलिनम, बाद में इंटरकरेंट रेमेडी अगर मिला तो, नहीं तो कोई मिला बाद में सिफिलिनम. दे आर दी रूटीन रेमेडीज व्हिच आई हैव यूज्ड. Tuberculinum test I have used instead of using tuberculinum in between as an intercurrent remedy, which has given me beautiful results. But most of the remedies in azoospermia cases, in male infertility cases of your ED, erectional deficient dysfunctions, were beautifully managed with Agnus castus, caladium, selenium. लो स्पर्म काउंट में मेरा बेरेटा कार भी चला है बहुत सारी बार. एक दो केस में पल्सेटिला बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड मम्स, इट हैज सेकेंडरी टेस्टिस में आ गया था, और दूसरा एक केस में कैंसर में था, उसको मैं आर्सेनिकम एल्बम और कार्सिनोसिन दिया था. I will straight away go through this case. This was my first case. A lady of 26 years, left ovary नहीं था, teratoma था. I will run through. This was the menstrual history. Physical generals were this: sweating, chilly, obesity, crave sweets. And I have rubric में ये आ गया मेरा: anxious, insecurity 3 marks, fears being alone, dream of robbers. सीधा चला गया काली कार 1M. 3 महीना काली कार 1M दे दिया. She did conceive. I am just ending up this case. If I would have gone to the life space investigation, that would have been a beautiful thing to unravel a girl's life history. But to me, at that particular time, the whole centrality of her thinking, her personality was insecurity. That's why I gave Kalikar 1M. ये क्या हो रहा है आजकल का जमाने में, लेडीज और गर्ल्स whoever comes to you, treating becomes as वुमन का रोल बदल रहा है ना. अर्लियर शी वाज ओनली हाउसवाइफ, अभी काम करना पड़ता है, मेन के साथ इक्वल है करके प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करते करते क्या हो गया, आगे चले गए अभी. एंड एनी कंपनी में एक लड़का एक लड़की आ गई, दोनों साथ में है, इक्वल है, तो दे आर टेंड टू चूज ए लेडी.
वही बिकॉज वो नो नॉनसेंस है, जो काम है उतना काम करती है, सीधा घर चला जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। शी डोंट, वो यूनियन नहीं बनाता है, वो सिगरेट मार के बास के ऊपर ये नहीं करती है, उसके पास वो काम करके चला जाती है। एंड दे आर मोर इक्वल नाउ, आई सिंसियरली फील। एंड इसीलिए उन लोगों को हम उनकी तरीके से देखना चाहिए, उनका प्रॉब्लम्स है वो देखना चाहिए। साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस में वो क्या हो रहा है, हार्मोन्स कैसे बदल रहे हैं, उसको देखना पड़ता है। सिर्फ एक दवाई पीसी ओढ़ के दिया तो नहीं चलता है। आई विल फिनिश विथ दिस वन केस। शी इज दी शी वॉज ए मारवाड़ी लेडी इन माई मेरे ऑनलाइन, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ डीवीजी रोड गांधी बाजार में, वो उधर वो पहचान वाले थे। मैं रात वापस जा रहा था, ऑलरेडी 11:30 हो गया था, 100 पेशेंट्स देखे थे। वो आ गए, 2 आदमी आ गए, बोला क्या है सर, मेरा बीवी को देखना है। अरे क्या रहे, इतने 11 बजे आ रहा है? नहीं सर, वो इतनी टाइम में ही आ सकता है, दिन में नहीं आ सकता। अरे क्या हो गया यार तुमको? हाँ हाँ, देखो सर, देखो सर। बोला क्या हुआ? बीवी किधर है? वो कार में बैठी है। अरे उसको लेके आओ, टाइम हो गया। तो लेके आई, देखा तो मैं देखता हूँ उसको, मैं पहला दिन में 3 मिनट में उसका मेडिसिन फिक्स कर दिया। लेकिन आपके वेरिफिकेशन के लिए ये सभी प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, मैं 3 मिनट में क्या तैयार कर लिया, वो लेडी को अंदर लेके आया, वो वेरी थिन सी थ्रू साड़ी से उसको लपेट के अंदर लाया। मैं बोला यार ये क्या रे, ऐसा स्थिति में लाया? वो बोलता है सर, ये प्रेग्नेंट होते हुए, द मोमेंट शी बिकम प्रेग्नेंट, अंदर का इनर वेयर्स शी कैन नॉट वेयर, सब निकाल देती है, रूम में छोड़ा तो नंगा रहती है। दिस इज हर 10th प्रेगनेंसी, 9 अबॉर्शंस हो चुके हैं। ऑब्वियसली विदाउट सेकेंड थॉट आई वेंट इनटू लैकेसिस 1M। वो लैकेसिस में पढ़ा तो मेरे को इतना मिला, वो जॉइंट फैमिली थे, बिजनेस वाले थे, मदर इन लॉ का अत्याचार बहुत था उनके ऊपर, देयर वर लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशंस एंड शी वाज सच अ गर्ल, शी कुडंट टॉलरेट एनीबॉडीज डोमिनेंस। वो लैकेसिस में वो ही होता है, देखिए। And I told you that she was in a joint family. They had no free time. Husband and wife meet करने को भी टाइम नहीं रहता था, सप्रेशन इतना होता था, ऊपर से मदर इन लॉ का सप्रेशन, मदर इन लॉ का अत्याचार, वो दौर्जन्य इतना रहता था। शी कुडंट टॉलरेट, सो सब करती थी। नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम आफ्टर गिविंग, वो ऐसा जैकिल एंड हाइड रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी थी। The lachesis will not tolerate authority, will not conform, and often psychological restrictions. Is like provoked snake, will strike back with anger and suspicion. वो तैर कर लिए थे, मेरे ऊपर इतना दौर्जन्य हो रहा है, ये इस घर विल नॉट है, उनका वंशाभिवृद्धि नहीं होता है। शी हैड डिसाइडेड इन हर माइंड। तो अलेन क्या बोलता है? फुलिश, हिस्टेरिकल, ये सभी होता है। आपको मालूम है हेरिंग्स वाज प्रूव्ड बाय, वो सुरुकुकु का जो उन्होंने किया, वो अमेज़न फॉरेस्ट में जो जब गया, उन्होंने कोई भी सुरुकुकु स्नेक को देख के वापस आया, उनको गार्ड समझते थे लोग। ये भी गया उधर, वो उसको बास्केट ओपन करते हुए, बिफोर द स्नेक कुड स्ट्राइक ऑन हेरिंग, वो मारा, हेरिंग ने उसको मारा, लेकिन ही बिकेम अनकॉन्शियस। बाद में उसको क्या क्या प्रूविंग में आया, दिस इज द हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट अप, एक दिन वो फेंट हो गया था, ही आस्क्ड फॉर वाटर, ड्राई थ्रोट, उसको लिविंग गॉड समझा था बिकॉज ही केम आउट ए डेडली सुरुकुकु। वो लेकेसिस 1M देने के बाद 1 हफ्ते के बाद वापस आई, और she came with any other normal lady with neatly dressed woman। तो तब मेरे को ये सब घर का सब मालूम पड़ा। I continued with lachesis, 1 or 2 doses of staphysagria here and there. Ultimately, lachesis did the trick and she did deliver। हमको ससेप्टिबिलिटी अंडरस्टैंड करना चाहिए, विदाउट ससेप्टिबिलिटी होम्योपैथी नहीं है।
और Sir, your voice is not audible. Yes. तो करंट गया, इधर वाईफाई भी गया, 1 मिनट वो आ रहा है क्या? Yes, now sir. it is audible. Now we can hear. Now we can hear. हियर वो खत्म कर देता हूँ 2 मिनट में। Yes, sir, please. 2 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। क्या होता है, काटना है प्रिज्म को पेशेंट को लाइकेसिस का केस निकालो एंड गो टू दी ठीक है। Application of infertility में in most of the cases, out of 800 cases, unexplained infertility 232, PCOD 132, fibroids 36, tubal blocks were amazing thing to cure, and anovulatory cycles also, missed abortions also. They were really challenging. और important case एक एक केस में बता सकता हूँ कभी वक्त मिला तो, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में किया है, and I think my time is up. I will just run through. And my clinic is ordinary simple clinic. I don't have any ultra modern facilities. I have only मेरा S9 का ये जो फोन है, मेरे सामने जो बैठे थे आते बच्चों को लेके, मैंने फोटो निकाला तो ये 1000 photos with their children with beaming parents. Thank you so much. I'm sorry I logged in late and मेरे को 45 minutes में work Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I don't know what happened to my presentation. Sir, your Voice is yes, sir. interrupting, sir. Voice is breaking, sir. This is all I can do. Thank you so much. Sir, you cannot connect. Okay, Actually, okay, sir. the Thank Wi-Fi you so much. Thank you so much, sir. Again चला गया मैं। ठीक है, thank you so much. Thank you so Namaskar. much, sir. After seeing Yes. the 1000 photographs of childless couples smiling, you are rightly called the Lokbanya, that is the Nadoja. That is the right word or right knighthood which is given to you by seeing the faces of smiling couples. And sir, the way you have presented in a very short span, you made us understand that what is the difference between preparing jaggery and sugar, and as well as how the disposition is very important in organum, sir. So that is the what is written by Dr. Hahnemann Yes, in sir. aphorism 150, 153, that the disposition plays the major role in Exactly. selecting the homeopathic specific. So that was amazing, sir. And the other example which you gave, that there is too much of water, but if you don't have a drop of water, then it is useless. So it was some very, very practical and illustrations which you have given, and we are very, very thankful to you. It was a very wonderful presentation. And sir, I feel that the time was less. Sometimes we would like to hear about the Surukuku snake poisoning of Dr. Herrings and how lecasis was proved. So Absolutely. from your बहुत अच्छा स्टोरी है ये। yes, sir. So we would like वो बहुत to अच्छा hear स्टोरी है it from- उनका। या एक बार करेंगे, वो पारुल जी को एक बार याद दिलाइए, मैंने पूछ रहा था। Sure, sir. Sure. We will convey your regards to Parul ma'am.
We'll convey our Yeah. your regards, sir. Sir, thank you so much, sir. And it was a brilliant presentation. For all the faculty who are here, I have just worked with Parul madam just 5 minutes back, and I have told her that BT Rudresh sir is on the webinar, and she is also watching, sir. She is watching the fantastic. webinar, sir. That's a fantastic. Thank you, sir. And sir, now I'll hand Thank you over so to much. Panda, sir, to propose the vote of thanks, sir. To Panda, sir. Thank you once again, sir. Thank you very much. Yes. Namaskar. Thank you, madam. Really, I am overwhelmed listening the lecture of BT Rudresh sir. It is said that gratitude is not only the greatest virtue, but the parent of all others. Thank you, Dr. Purab sir, for giving me opportunity to propose the vote of thanks of today's program on behalf of Homeopathic Faculty, Parul University. I express my gratitude and heartfelt thanks to our research person, Dr. B.T. Rudresh sir, for sparing his valuable time to enrich the knowledge of our fraternity. I feel proud of you, sir, for your way of presentation with multi-dimensional skill, with good pictures of 100 family, those who have get benefit by your treatment. I am very much thankful to our dynamic president, Dr. Devanshu Patel sir, for his insistent motivation for conducting such type of academic activity in digital platform during the COVID-19 crisis. I express my gratitude to our respected Dr. Komal Madam, Director Komal Madam, for her support. I am indebted to my colleagues Dr. Purab Desai, Dean of the Faculty and Principal, Jawaharlal Nehru Homeopathic Medical College, Dr. Hina Rawal, Principal, Ahmedabad Homeopathic Medical College and Chairman, Board of Study, Parul University, and Dr. Hitarth Mehta sir, Principal, Rajkot Homeopathic Medical College, for their consistent unite effort to conduct such webinar series. I extend my thanks to all the viewers of the webinar for making this event success one. I feel proud to express thanks to Brijesh sir and Jiten sir, PU webinar technical support system experts, for their kind cooperation. Again, thank you all. Really, I am again express my gratitude BT Rudresh sir specifically for his simplicity and proud to be a good homeopath and want to establish himself as a homeopath, not by any type of portfolio. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One small request. मैं इंडिया का एजुकेशन के Voice is not audible. It is interrupted. मैं CCH में 10 साल से हूँ and from 1 year I'm board of governor executive में हूँ. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. हाँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है, देखो अगर होम्योपैथी इंडिया में है, हेलो. Yes, sir, please. Yes, sir. Yes, sir. अगर होम्योपैथी इंडिया में है, that is mainly because of उसका अर्हता, स्थिरता, योग्यता के ऊपर है. वो किसी की मेहरबानी से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का मेहरबानी से नहीं है. हमको कॉलेज में प्रैक्टिकल बताना है, एक एक केस को कैसे बताना है. आपसे मेरा विनती है, the quality product that which you produce from your college, they must be in a much better way to prescribe. अगर इस दुनिया में इतना नाम आ गया, that is mainly because of the practitioners. I must tell you this. हम कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट रखे, लेकिन अगर if you fail to transfer your theoretical knowledge into practical knowledge, and if your students don't practice homeopathy, and even after spending 5.5 years, even spending after 3 years, मेरा विनती टीचिंग स्टाफ से यही रहेगा कि you prepare your students. तुम्हारा 10 या 12 MD लोग है, अगर उसमें 4 लोग पक्का होम्योपैथी है ना, that is the best contribution of yours. एक एक के ऊपर थोड़ा दबाव डालिए, एक एक के ऊपर whoever is interested. आजकल का लड़के भी ऐसे होता है, लड़की भी ऐसा, तो मालूम है, but catch hold of people who are too good, prepare them like how they prepare for 100-meter dash.
how they prepare for Olympics. ऐसा आप एक एक टीचर, एक एक लड़की, एक एक लड़का को पकड़ के उनको तैयार करो, क्योंकि वो बाहर आने के बाद वो एक अच्छा आदमी बने, अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर बने, उससे होम्योपैथी बचता है। हमारा कितना बड़ा बिल्डिंग है, मेरा क्लिनिक आप देखा तो आप हैरान हो जाएंगे, अरे इतनी छोटा क्लिनिक है, ऐसा है। ऐसे में क्या, obviously it is not the buildings, it is not the infrastructure, it is the conscientious of the product that which you produce from your college. तो मेरा यही विनती रहेगा, ये आपके लिए वो बोधन नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सी दैट ईच वन, कोई देखे ना देखे, कोई तुम्हारे ऊपर पोलिसिंग करे ना करे, आप यू हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। वो एक एक आदमी, एक एक दो स्टूडेंट्स को एक एक बरस में को बनाओ। आई थिंक यू हैव डन द वंडरफुल जॉब सर, दैट इज ऑल आई रिक्वेस्ट यू। Yes, sir. Sir, We are surely very we are already on the same path, and we assure the same, the highest homeopathic output from our institute, sir. So Thank you, nice sir. of you. So nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Pranam, sir. Thank you. Yeah.